My name is Ibrahim Bas and I'm founder and CEO for Aameeq. And Aameeq is a virtual reality platform, and it's one of virtual reality startup in Pakistan, and we are working for learning and development in Pakistan. Aameeq is derived from immersive. So the idea of virtual reality is having an immersive experience, and we thought of creating an organization which provides immersive learning and development experience to the Pakistani society. We found this vacuum that a majority of VR and AR technology is available for games and entertainment or marketing perspective, but there was a gap for learning and development, and Aameeq is there to cater that gap out. And we are working really hard in order to create a virtual reality ecosystem in Pakistan, and we are doing this through different channels and different offering. As you know, that virtual reality learning and development is a versatile topic, and it covers it kind of hits corporate sector and education sector. So what we are doing is we are offering custom built or or different programs which cater their need, and we are fetching backs from them that what best content is required in order to fulfill their need. But that's what Aameeq is and Aameeq is doing about. टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और उसमें बहुत सारा काम हुआ है, और रीसेंट ईयर्स में आप इसको समझ लें 2018, 19 या 20 में आप समझें कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रोमिनेंटली यूटिलाइजेशन में आ गई है. सो अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें कि वर्चुअल रियलिटी इमर्सिव नहीं थी, बट नाउ क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर साइड पे इम्प्रूवमेंट हो रही है और हार्डवेयर साइड पे उसके इक्विपमेंट इम्प्रूव हो रहे हैं, सो ये मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज़ में आ रही है. कि एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझें कि इट वाज डिफ़िकल्ट कि हम जो है अपने फ़िज़िकल सेल्फ को वर्चुअल इन्वायरमेंट या सिमुलेटर्स में लेके जा सकें, बट नाउ एज़ जो स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं उसके अंदर सेंसर्स हैं, कैमराज हैं, वो आपके फ़िज़िकल मोशंस को सेंस कर सकते हैं, एंड इट कैन replicate your motion into the environment आप जिसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं. लेट्स से आप इसकी एग्जांपल लें गोल्फ से. सो गोल्फ खेलना इज़ अ वेरी मोशन बेस्ड टास्क, एंड आर्म थोड़ा सा भी ट्विस्टेड हो सो आपकी बॉल की डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाती है. सो यू नीड सम काइंड ऑफ मैकेनिज़्म या कोच जो आपको बता सके कि यार ये आपका जो है आर्म ट्विस्टेड था, इसकी वजह से ये बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई है. सो अगर इफ़ यू प्ले वर्चुअल गोल्फ इन वर्चुअल रियलिटी, देयर इज़ एन कोच इनटू दैट जो आपको गाइड कर सके कि आपका जो है आर्म ट्विस्टेड था, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ गोल्फिंग और वॉट एवर यू नीड. सिमिलरली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं एजुकेशन के अंदर. लेट्स से फ्रॉग डाइसेक्शंस हो गए या फिज़िकल लैब्स हो गई, केमिस्ट्री फिज़िक्स से रिलेटेड. सो जहाँ भी आपको ह्यूमन हैंड से कुछ टास्क परफॉर्म करने हो, लेट्स से किसी मोटर को आपने ओपन करना है और उसको वापस क्लोज़ करना है, सो यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क जो मैनुअल है, एंड उसकी प्रैक्टिस अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर लें एंड देन उसको आप फिज़िकली देखें तो देयर इज़ एन डिफरेंस, और आपके स्किल सेट में जो है इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं उसमें. पाकिस्तानी सोसाइटी इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. लेट्स से आप किसी भी प्रोमिनेंट यू विल फाइंड अ वर्चुअल रियलिटी स्टेशन विच इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर गेमिंग्स, और बच्चे बहुत ज़्यादा उससे अम्यूज़ होते हैं एंड दे प्ले विद दैम. एंड अगर आप टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर साइड पे देखें, सो पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ देयर जिसमें बहुत मेजर आपके पास डेवलपर अवेलेबल हैं विच आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, बट लोकली कोई भी कंटेंट क्रिएट करके इस सोसाइटी के लिए जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सो दोनों एस्पेक्ट पे अगर आप देखें तो फेमिलैरिटी है, बट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग एस्पेक्ट के ऊपर, लेट्स से देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्चुअल टूर क्रिएट्स करके अपने क्लाइंट्स को जो है, लेट्स इस्लामाबाद बेस्ड प्रोजेक्ट है उनको, कराची में किसी क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, एंड यू कैन विजिट देयर साइट ऑफिस, और यहाँ पे आप उनको जो है आपको वो इस्लामाबाद जो प्रोजेक्ट है उसकी आपको पूरा वर्चुअल टूर मिल जाता है. सो टेक्नोलॉजी इज़ देयर, डेवलपर्स आर देयर, बट मार्केट फिट या मार्केट के लिए कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो हम कह सकें कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर पाकिस्तानी मार्केट हो. लेट्स से अगर आपने कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करना है जिसमें आप कहते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़िज़िक्स की लैब चाहिए या केमिस्ट्री की लैब चाहिए, सो वो यहाँ आपको लोकल कंटेंट नहीं मिलेगा. दैट वुड बी समथिंग
इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलेगा, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, या आपको जो है वो कंटेंट आपके जो लाइंस ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड नहीं होंगे. सो द वैक्यूम इज़ के लोकली डेवलप्ड कंटेंट नहीं है वर्चुअल रियलिटी में, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इनटू द लर्निंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट के ऊपर हमारी कैटेगराइजेशन नहीं हुई है. वी आर वेरी कोर फोकस्ड टुवर्ड्स using virtual reality for learning and development, that's it. We are not into के हम जो है games भी develop करें या हम जो है वो marketing content भी develop करें. We are specifically oriented into learning and development. Now whatever comes across, let's say an organization need a custom built learning and development experience for themselves. Let's say there is a very prominent bank in Pakistan which is looking for onboarding processes, so that's a custom built process. So we tend to offer that services. We can create custom built solution for them. Or if an organization comes in and they ask for fire safety program, so we have that content available which we can offer it out from our shelf. So to the point, again, whatever comes under the umbrella of learning and development, Aameeq will cater it and is trying to cater it. That's it. पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में वर्चुअल रियलिटी का स्पेसिफिकली इकोसिस्टम बिल्ड करने की ज़रूरत है फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. एंड दिस इज़ समथिंग which West is doing, and they are doing it very aggressively. And पाकिस्तान में I don't see any major players जो इस एस्पेक्ट पे उस पर काम. एंड इकोसिस्टम बिल्ड करना जो है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. इट नीड्स लॉट ऑफ एडवोकेसी, लॉट ऑफ लॉबिंग, लॉट्स ऑफ कन्विंसिंग, परसुएशन, मार्केटिंग, वट एवर कम्स अंडर द अम्ब्रेला कि जो आपने जो है वो डील क्लोज करनी है. सो आई बिलीव कि इट्स अ लॉन्ग वे, and we tend to give the very first experience of immersive virtual reality in Pakistan to the general masses, not to the very specific Gen Z or different specific category. Let's say there was a survey conducted by Aameeq जिसमें we find out that 96 or you might say 97% of a senior leadership or senior decision maker have experienced immersive or have had immersive experience of virtual reality for the first time through Aameeq devices. Sad part for our society that a decision maker who should be familiar with the technology is not familiar, and it's a very good news for AR VR developing associations or society or startups that there is a vacuum into this society जिसको cater करने की ज़रूरत है. So goals are very simple. We believe कि हम first experience journal masses को immersive experience जो है virtual reality का Aameeq के through provide करें, and we are very clear to that goal, and we need to make it towards learning and development, so that rather than having an entertainment aspect to it, people tend to gain some knowledge out of their investment into that experience. That's it. My last words would be कि give it a try. Technology evolve कर रही है. We do believe कि उसमें glitches हैं. The content might not be as per the client's need. But हमारी society is a latecomer into every technology. Let's say when people start अपनी टेक्नोलॉजी वो डिस्कार्ड करना छोड़ कर देते हैं, एंड देन वो जो है वो पाकिस्तान में डिप्लॉय हो रही होती है. सो कमर्शियल यूज़ केसेस में आई विल रिक्वेस्ट टू दी एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी टू गिव इट अ ट्राई ऑफ हैविंग दिस एक्सपीरियंस फॉर देयर एम्प्लॉयज़, फॉर देयर स्टूडेंट्स, and let's see how this technology evolves and what next it has to offer.